रंगमंच कनाडा की मल्टी कल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं, दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कैनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक खुमार आलूद सुबह, 6 डिग्री की खुन की सर्दी दरवाजे पर हौले हौले दस्तक दे रही। पत्ते शाखों से जुदा हो रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जो आया है उसे जाना भी है। यही कुदरत का तमाशा है। नफरत और कशमकश वाले इस दौर में हौसला रखिए, वक्त बदलते देर नहीं लगती। मौसमों की तरह हालात भी बदल जाएंगे। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक खुश जमाल, खुश कलाम और खुश खिसाल तारीख की स्कॉलर से होगी। आप पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में जनूबी एशिया और इस्लाम पढ़ाती हैं। इनकी किताब प्रिंट एंड द उर्दू पब्लिक पर आज दिलचस्प मालूमात हासिल होगी। आइए, इनका इस्तकबाल एक बड़े ही रोमांटिक शेर से किया जाता है कि अभी खिजा है तो है ये आलम, बहार आई तो क्या करेंगे। अभी खिजा है तो है ये आलम, बहार आई तो क्या करेंगे। गुलों का दामन रुफू करेंगे कि अपना दामन सिया करेंगे। वेलकम टू आवारगी विद दानिश। मोहतरमा मेगन रॉब साहिबा, आदाब। आदाब। तमाम हाज़रीन और नाज़रीन की खिदमत में अदाब और सलाम पेश करती हूँ। मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ कि मुझे आप सब के रूबरू होने का मौका दिया गया। आपका बहुत शुक्रिया जिन्होंने तारुफ में मेरी इतनी इज़्ज़त अफजाई की। इस नशस्त के लिए, आपकी तमाम मेहनतों काविश के लिए मैं आपकी ममनून हूँ। अच्छा साहब, इससे पहले कि आज की दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो, आइए कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी देखी जाए। तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फो भी आप देती चलेंगी और दोस्तों को बताऊं कि साहब ये क्या है। और तो बताएं साहब ये क्या है। So this is the cover of my book, French in the Urdu Public. खूबसूरत कवर। Muslims news. जी जी बताइए। इस पर बात होगी, तो आइए दूसरी तस्वीर पे आते हैं। Hi, so I'm printing the title of Medina newspaper just for मेरी किताब लिखी गई है. I focused on Medina newspaper and Urdu newspaper published from Bijnoor Qasba, and I found a I found a lithographic printer in Philadelphia who taught me how to print using the technology similar to Medina. ये आप खुद प्रिंटिंग प्रेस आपने खोल लिया? जी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ. So I took private lessons. ये lithographic printing press है. So उसके नीचे आप देख सकते हैं कि वो संगी जिस पर मदीना का लफ्ज लिखा गया है. So this is the process of putting pressure on the stone so that the word Medina would be printed properly on the paper. Oh, this is a lovely memory. मैं दिल्ली में थी 2 साल पहले. मैं गई थी AAS in Asia के लिए. So देख सकते हैं, actually 3 साल पहले almost. Wow, 2018 न्यू दिल्ली में. So अली खान महमूदाबाद साहब के साथ मैं एक पैनल ऑर्गेनाइज कर रही थी, और ये फरीदा जमान है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं. तो हम तीनों पैनल पर बैठे हुए थे और अपनी तहकीक
पेश करते थे मुझे बहुत मजा आया और इसका वो बहुत मतलब बहुत यूजफुल भी था वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छे सवाल मिले और I was able to progress with my research project because of that conversation. Oh, so मैंने अपनी बहुत अच्छी दोस्त और very talented colleague Richard Williams मैंने उनकी दावत दी University of Pennsylvania में आने. So he presented a talk on gender and genre in Urdu literary culture at the University of Pennsylvania. Interesting. G. Oh, and then G. And this I taught, this is a very controversial photo. I teach a class on media and religion to ask my students, मैं उर्दू अखबारात पर तहकीक करती हूँ ना, लेकिन students जब मैं पढ़ाती हूँ वो अपनी मीडिया के बारे में बात करना चाहती हैं ना, वो सोचना चाहती हैं कि अच्छा आजकल हम कैसे ट्विटर के बारे में सोच सकते हैं very in a systematic and sophisticated manner. So उस क्लास में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि the questions I'm asking of Urdu newspapers are still relevant आज भी ना, कि one reason why Twitter is so useful and social media and Facebook is so useful as a medium is it's so flexible. जैसे आप ये program broadcast करते हैं or people from many different countries are able to join in this conversation. And for me, उस ज़माने में 19वीं सदी में the Urdu newspaper also had that feeling of community. It was relatively inexpensive to print lithographic newspapers, and they were creating this beautiful space where people could have vibrant debates in the same way that we're having this vibrant conversation today. So this is why I have that picture of Twitter on there. Oh, so this photo is with two of my very dedicated undergraduate students. And I'm building a digital archive of a woman named Sharafa Nisa Khanum, who was born in the 18th century in Bihar, or what is now Bihar, in a town named Purnea. And she actually became a consort or an informal wife of an East India Company official before moving with him to England, marrying him. She actually converted to Christianity and lived with her children in England for the rest of her life. And so I met her descendants who had some of her textiles, some of her clothing, jewelry, letters from her brothers that were the Farsi mein likhe gaye the. And it was, so we made them available and translated them. And then the digital archive will come out in early next year. This is my wedding. This is my husband is the tall one, Terry Scott. He is Janubi Africa se hain. He's from South Africa, and the two lovely people on the outside are my mother and father. Oh, this is also, I just realized this one was going to be shown. Yeah, this is one of my favorite pictures from our wedding day. So हम England में रहते थे. मैं अमेरिका से हूँ. मैं Tennessee में पैदा हुई, लेकिन 9 सालों के लिए मैं England में रहती थी. और वहाँ पे मेरे husband Terry वो graduate degree कर रहे थे. So University of Oxford पर हम मिले. और and that's when we became friends, and then we got married in England as well. So this is in Burford, Oxfordshire. Congratulations. Thank you. Oh, this is my husband actually took this picture. The University of Oxford party. I was in New College, Oxford. So this is a photograph from one of their annual dinners at New College around the end of Michaelmas term in December.
So I took this photograph. This silhouette isn't me. It was a friend of mine, but this was was it my first visit to Taj Mahal? My first visit to the Taj Mahal, I think, and it was in 2005 or 2006. And so this is a photograph of someone being very struck by the beauty of the Taj Mahal, and I was trying to capture the contrast of light. And this is so मैं लखनऊ में रहती थी 1 साल के लिए. मैं उर्दू पढ़ाने के लिए लखनऊ गई, और वो खानदान जिनके साथ मैं रहती थी लखनऊ में, मैं वापस जाती रहती हूँ, मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए. सो ये एक विजिट पर ये फोटो, this is where the photo is from. Or actually this was a both joyful and sorrowful day, because we were celebrating the life of Ram Madhwani, who is a very famous librarian, bookseller in Lucknow, and also a good friend of my supervisor, Professor Francis Robinson, who lives in Egham and works at the University of London, Royal Holloway. And so I was preparing to go to his memorial or life celebration at the Lucknow Country Club in this photograph. Oh, this is a photo of me on actually it's from my honeymoon. I don't think you knew this. So I took I insisted with my husband that we go to India on our honeymoon. And so this is this is in Jaisalmer, near the Thar Desert. So we thought we'd explore a new area for both of us. And we enjoyed the beautiful architecture of Jaisalmer, and also explored the Thar Desert as well. Yeah. Oh, what is this? I'm actually trying to remember. This must be an older photo. Gee, this is Lucknow. I took it, but I can't remember exactly when I took this, because I went to the Imambara so many times when I was in Lucknow. But it must be from. So मैं लखनऊ में रहती थी the summer of 2009, and then also again from a year 2011 to 2012. So in sometime in that period, I must have taken this photograph. Beautiful picture. बहुत शुक्रिया आपका. Oh, ये मेरी भांजी. This is my भांजी Ella. So मेरी एक बहन है, और मेरी बहन के 2 बच्चे हैं. Or so अब मेरी भांजी 10 साल की है. She's so big, but this was when she was only 4 or 5 months old. She's so sweet. Oh, this isn't me. This is Meghan Markle and Desmond Tutu, but I just thought that this photo was very sweet, and so I put it on my profile. Oh, this is my beautiful dog. This is Saska. So जब मैं फिलाडेल्फिया आई, so मैंने कहा था ना कि मैं ऑक्सफोर्ड में रहती थी 8-9 सालों के लिए, और मैं तब अमेरिका वापस आई जब यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में नौकरी मिली. So this is 2-3 months after I came back to America, and I immediately adopted a dog. This is from my honeymoon. But we did the very touristy thing of going on a camel safari through the Thar Desert. Adopt तो नहीं किया इसे. जी. You haven't adopted the camel, I think. No. This isn't my camel. This was just a foster camel. You did. I just one year for Halloween, I dressed up as Pablo Neruda, and the resemblance is uncanny. I think you'll agree. Oh, this is just my professional picture that I use for all of. Thank you very much. This beautiful picture, yeah. So, Janab, wonderful journey. बात मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, मगर there are a lot of admirers. They're already here. तो पहले उनके कुछ compliments, comments ले लें, और उसके बाद
Oh my God, so many. Saif Mahmood साहब आपको कह रहे हैं आदाब मेगन, what interesting photos. Adab. Your printing photos remind me that the first lithographic Urdu printing press was purchased and run in India by Maulvi Muhammad Bakr, father of the legendary Maulvi Muhammad Hussain साहब. Good. और शादी Thank you so की much. तस्वीर भी बहुत खूबसूरत है. आदाब साहब भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. और जनाब खुर्शीद अहमद हमारे अलीग प्रोफेसर हैं, ही इज जॉइंड फ्रॉम हैमिल्टन. और आदाब कह रहे हैं आपको. तरन्नुम बानो आदाब कह रही. मंजर जमील भाई is a social activist from Kolkata. Archiving the empire now becomes all the more necessary when the right-wing present government of our country is hell-bent. क्या कहा जाए. थैंक यू मंजर भाई कह रहे हैं वाओ व्हाट अ पिक्टोरियल इंट्रोडक्शन वी आर विटनेसिंग. ग्रेट. खुर्शीद अहमद साहब पूछ रहे हैं आपने उर्दू कहाँ और कैसे सीखी. ये सवाल अभी हम भी करेंगे, तो आप ये सुनिएगा. दरख्शा इम्तियाज साहिबा कोलकाता से देख रही हैं, आदाब कह रही हैं. और मंजर जमील साहब बहुत ही इम्प्रेस हैं आपसे, और कहते हैं यू आर अ ब्यूटीफुल जेंटल लेडी. ताजमहल वेट वाली तस्वीर बड़ी प्यारी है माशाल्लाह. और सैफ भाई कह रहे हैं यू शुड यूज द नरोदा पिक्चर एज योर प्रोफेशनल पिक्चर. नियाज जयराजपुरी साहब देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं. एक्सक्यूज मी, आज मेरा गला भी खराब है. रोशन अफरोज आपको आदाब कह रहे हैं. संतोष बकाया साहिबा देख रही हैं जयपुर से, आपको आदाब कह रही हैं. वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर. और उस्मा दानिश भी देख रही हैं. हमारी बेगम साहिबा और सैटरडेज को बिजी होती हैं. शी इज इन द अपर रूम समवेयर, और मौका निकाल के वो थोड़ा थोड़ा देखती रहेंगी. वो भी आदाब कह रही. तो ये तो सब हमारे दोस्त सारे जमा हुए हैं आज. और शाहिद अख्तर साहब हमारे दोस्त भी हैं, बहनोई भी हैं, और वो भी गुड़गांव से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं. तो ये तो साहब दोस्तों का जमघटा था. तो इससे पहले कि बात शुरू हो, एक बड़ा फॉर्मूला क्वेश्चन हर मेहमान से हम करते हैं कि ये जो वबा गिला बला व्हाटएवर यू कॉल इट कोविड-19 है, आपके लिए ये क्या था, रहमत या जहमत? कैसा तजुर्बा रहा आपको? इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे सब लोगों के लिए ये कोविड-19 का तजुर्बा मुश्किल था हमारे लिए. जैसे मतलब वो सब लोग जो देख रहे हैं उनके खानदानों में भी कुछ tragedies I'm sure have occurred, and in ours as well. लेकिन एक तोहफा भी दिया गया है कि वक्त मिला अपनी जिंदगी के बारे में सोचने के लिए कि क्या अहम है, क्या हाँ मैं किस तरह का काम करना चाहती हूँ अपनी जिंदगी में. सो मुझे लगता है कि इस तरह के माहौल में जब full pandemic scale tragedies जब वो होते रहते हैं, तो we must think कि हमारे अपनी जिंदगी में हम क्या impact देना चाहते हैं. और इस माहौल में मुझे ये पता चला, I've come to this realization कि मैं पढ़ाना चाहती हूँ. I care a lot about my students. ज़रूर अपने खानदान के बारे में हमेशा सोचती रहती हूँ. I want to care for my friends and family. लेकिन मैं सिर्फ उस काम पर गौर से काम करना चाहती हूँ. The work that adds some positive value to the world. और मैंने कहा था पहले in a previous panel जिस पर हम दोनों बैठे हुए थे कि this journey to Urdu personally has been a very significant one for me. Though I've also been emphasizing more my practice not only in Urdu but also calligraphy.
So calligraphy or lithographic printing ka bahut mashq karne lagi. Luckily, I was able to find an instructor online as well. मेरी उस्तानी हैं वो अंजुमन खुशनवीसी Tehran, so from Iran. She moved to Canada. So जब मैं कनाडा में रहती थी, हम साथ साथ काम करते थे. मैं उनके घर जाके I sat at her feet and learned. So this is one way that COVID-19 has impacted me, by making me think about what kind of impact I want to have on the world, and what are the topics that lends the most room for me to grow personally. So one of the answers has been through calligraphy, which I've begun to study. Yeah. Nastaliq calligraphy. Nastaliq, wonderful. आपका बचपन आपने थोड़ी सी रेफरेंस दी थी, बचपन कहाँ गुजरा, यानी कहाँ पैदा हुई, और you're so lively now, अभी आप जिंदगी से भरपूर हैं. बचपन में कितनी शरीर थी, ये बताइए. So Memphis, Tennessee में पैदा हुई. Wow. Memphis, Tennessee, Johnny Rivers. Yes, Memphis, Tennessee, Elvis Presley, Johnny Cash, and actually for many generations, my family on my mother's side has been in the American South. So, मैं 18 साल की थी जब मैं Tennessee से Indiana University गई. So college के लिए मैं Indiana University of Bloomington पर अपनी पढ़ाई कर रही थी, और उन 4 सालों से 1 साल इंग्लैंड में थी. So I did a year study abroad at the University of Oxford. लेकिन यूनिवर्सिटी शुरू करने से पहले मेरी दादी जी वो she took me to India with her. Or that was a very influential trip. So जब मैं Indian University पर अपनी पढ़ाई कर रही थी, मैं हिंदी की पढ़ाई शुरू की प्रोफेसर रेबेका मैनरिंग के साथ, और हर गर्मियों के दौरान मैं इंडिया में थी. So after freshman year college, मैं इंडिया गई American Institute of India Studies के साथ, और एक दूसरे गर्मियों के दौरान मैं फिर से इंडिया गई State Department workshop के लिए on Indian architecture. So जब भी मैं इंडिया जा सकती थी, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं वापस जाऊं. I wanted to spend as much time as possible अपनी हिंदी की they are like progress. I wanted to make progress in my languages. और Indiana University के बाद मैं इंग्लैंड गई और अपनी फारसी की पढ़ाई शुरू की वहाँ पे इंग्लैंड में. और मैंने कोशिश की ईरान जाने के लिए. मैं ईरान जानना चाहती थी, लेकिन उस जमाने में खास तौर पर अमेरिकन लोगों के लिए ईरान जानना मुश्किल था. So actually लखनऊ ही में अपनी फारसी की पढ़ाई और गौर से शुरू नहीं थी, लेकिन I made progress in लखनऊ, क्योंकि वहाँ पर एक मुगल पर्शियन प्रोग्राम भी है. और फारसी पढ़ने के बाद I missed Hindi. So मैंने अपनी उर्दू की पढ़ाई शुरू की क्योंकि मैंने सोचा कि अच्छा अभी फारसी की ज़बान I've progressed in it a little bit, and I was drawn to Urdu as a language. और उसके बाद I began to focus on my Urdu studies, and this was I don't know how many years ago, maybe 13, 14 years ago. आप इतनी शुस्ता और सलीस उर्दू आप बोल रही हैं, तो इसको सीखने में कितना टाइम लगा? How many years?
So I'm 35 now, and I started Hindi in so मैं 18 साल की थी जब मैं अपनी हिंदी की पढ़ाई शुरू की, and then I started my Urdu studies when I was 21. So 14, 15, it's been 14 or 15 years of working and traveling in India. There's still so much time and so much progress left, of course, to have. लेकिन इस तरह की गुफ्तगू मेरे लिए बहुत मुफीद है क्योंकि फिलाडेल्फिया में रहती हूँ, और it's been 2 years since I've been able to go back to India, COVID की वजह से. So लोगों से बात करने से बहुत खुशी होती है मुझे उर्दू में, और I always try to find opportunities to continue to develop. तो मगर आपने ये नहीं बताया कि उर्दू से इश्क कैसे हुआ. Why you fell in love with Urdu? Okay, ठीक. So अपनी उर्दू का तालीम के बारे में कुछ अर्ज करती हूँ, ठीक. So कुछ हद तक मुझ जैसे लोगों के लिए, मतलब अमेरिकन लोगों के लिए जो मेम्फिस टेनेसी में पैदा होते हैं, एक ही रास्ता है कि किसी उस्ताद की मदद से सीखें. चनांचे मैंने यूनिवर्सिटी के क्लासों उर्दू सीखने का आगाज किया, और उसके बाद अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज में उर्दू की तालीम लेना काफी सुदमंद साबित हुआ, ठीक. सो क्लासरूम का असर बहुत पड़ा मुझे. मेरी दरस और तदरीस की शुरुआत उर्दू और हिंदी ज़बान से हुई, जैसे मैंने कहा था, और मैं 1 साल तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उर्दू और हिंदी की बाज़ाब्ता मामला भी रही. मुमकिन है कि मेरा सफ़र उर्दू इस बात की दलील बन जाए कि किसी की जाए पैदाइश और परवरिश उर्दू की जन्म धरती से दूर भी हो. अमेरिका में बहुत कम लोग अपने इलाकों से निकलते हैं जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई. उसका मतलब नहीं कि वो अपने पर फैलाकर दूसरे इलाकों और तहजीबों का सफर नहीं कर सकते ना. मेरे बचपन से ही 2-3 बहुत ही अच्छे दोस्त थे जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान और पाकिस्तान से था, और मेरे सौतेले दादा पाकिस्तान के रहने वाले थे. इसलिए मुझे अपनी दादी मोहतरमा कैथरीन चौधरी के तुफैल हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जानने और वहाँ की तहजीब और सकाफत को समझने का मौका मिला. और मजीद मेरे शौक को तक़वियत तब मिली जब मैं इंडियन यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थी, जहाँ हिंदी उर्दू की तालीम दी जाती थी. उसके बाद का सिलसिला अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज के साथ शुरू हुआ, जब मैंने जयपुर में हिंदी और लखनऊ प्रोग्राम में उर्दू सीखने का आगाज किया. जैसे दोस्ती या मोहब्बत की जज्बात हमारे दिलो दिमाग को बदल देते हैं ना, ठीक इसी तरह हमें उर्दू ज़बान के तलबा को समझाना चाहिए कि because this happened to me, कि अगर आप असल में उर्दू या किसी और ज़बान को पढ़ना चाहते हैं, इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा हमें to our students के मंजिल तक पहुंचते पहुंचते हमारी शख्सियत में भी तब्दीली आएगी ना. आगाज़ सफ़र और इसके इख्तिताम के दौरान हम वो नहीं रहेंगे जो पहले थे. और ये भी मुझे ये ऐसा हुआ, इस एहसास के बगैर मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन है. मुझे लगता है कि आपके दिल में एक मुझे ये याद आई इकबाल ने क्या खूब कहा दर ज़बान फारसी, हस्त मैं शौक़े नहा अंदर दिलत
چشم اگر داری بیا بے نمایمت. اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں ایک معشوق چھپا ہوا ہے. اگر آپ کی بصیرت والی آنکھیں ہیں تو آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. سو میرے خیال میں زبان پڑھنے اور زبان سیکھنے کے اصلی معنی یہ ہیں کہ ہم دیکھنے کے نئے طریقے تشکیل کریں. واہ واہ زبان اردو وہ چشم ہے جس سے ہم دل میں چھپے معشوق کو دریافت کر سکتے ہیں. اور یہ بھی میرے لیے ہوا. یہ بہت ضروری ہے کہ لسان کے ساتھ ساتھ طلبی اردو سے پیدا کر دے یہ خیالات وہ جذبات پر بھی غور کریں. That what emotions emerge when we study a different language than the one to which we were born. میری خوش بختی تھی کہ امریکہ، انگلینڈ اور انڈیا میں بھی ایسے معالم ملے جنہوں نے مجھے یہ بہت اہم درس دیا. واہ واہ. یہ صاحب لاہور پاکستان سے ہمارے بڑے اچھے دوست ارسلان رضا بھائی دیکھ رہے ہیں اور ہی پبلشر ہیں، آپ کی لائن کے ہیں. یہ بھی لیتو سے لے کے آف سیٹ تک پرنٹ کرتے رہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دونوں احباب کو آداب و بہت خوب، کیا شائستہ زبان ہے، گفتار بھی شیریں ہے. بالخصوص ایسے لوگوں سے اردو زبان کا سننا جن کا اردو اور ہندی سے رشتہ نہ رہا ہو، ان سے سننا کتنا کمال ہے. اور شکریہ ارسلان بھائی، تھینک یو فار جوائننگ. احتشام جمیل صاحب ہمارے بھانجے صاحب ہیں، کراچی سے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آداب عرض ہے اور خوشگوار حیرت. اور ریحام عبداللہ میری بہت اچھی دوست ہیں، شی از واچنگ فرام کائرو، مصر سے دیکھ رہی ہیں. اور ریحام بھی اردو پڑھاتی ہیں ماشاءاللہ، اور اردو کی بہت اچھی ٹرانسلیٹر ہیں، اور کہہ رہی ہیں آپ کی باتیں سن کر ایسی عمدہ اردو سن کر دل مسرور ہو رہا ہے. تھینک یو ریحام. اور ناصر ایم کمال ہمارے دوست ہیں، علی گڑھ کے ساتھی ہیں، اور یہ دہلی یونیورسٹی کے اردو کے پروفیسر ہیں اور یہ ماشاءاللہ فرما رہے ہیں. وقار رئیس بھائی ہمارے دوست ہیں ٹورانٹو کے، یعنی ہمارے پکرنگ سے دیکھ رہے ہیں. وقار کہہ رہے ہیں کہ زبانیں سیکھنے سے آپ کا ہورائزن بڑھتا ہے. آغا خان نے کہا یہ ہمارے وقار بھائی کو، وہ آپ کو بتا رہے ہیں. اور طارق احمد صاحب کشمیر سے دیکھ رہے ہیں اور آداب کہہ رہے ہیں. سو ونڈرفل پیپل جوائننگ، بڑا مزہ آ رہا ہے. تو آپ حضور والا تاریخ یعنی ہسٹری کی اسٹوڈنٹ بھی رہی ہیں، ہسٹری پڑھاتی ہیں، تو بیک گراؤنڈ آپ کا جو ہے وہ کرسچن ماحول سے آپ نے پرورش بچپن گزرا، مگر اسلام ان ساؤتھ ایشیا کا خیال کیسے آیا؟ کوئی خاص وجہ؟ سوال ہے. I think that جیسے میں نے کہا تھا، میری دادی جی کے سیکنڈ ہسبینڈ، میرے سوتیلے دادا، وہ پاکستان سے تھے. سو ہمیشہ میرے خاندان میں بہت ایک اوپن مائنڈیڈ ایٹیٹیوڈ تھا کہ although کرسچن لوگ تھے and for many generations Christian، وہ میرے خاندان، میرے والد اور والدین had a great curiosity about the world، اور وہ ہمیشہ ہمارے لیے، مطلب ان کے بچوں کے لیے، وہ چاہتے تھے that we would understand the broader landscape. اور یہ خاص بات ہے میمفس ٹینیسی میں. عام طور پہ لوگ جو، مطلب I love my home land and my hometown، لیکن عام طور پہ لوگ انگریزی زبان کے علاوہ اور زبان نہیں سیکھنا چاہتے تھے، or they don't have opportunities to learn other languages کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. It's not like in India or Pakistan where from day one you're exposed to all of these different linguistic traditions, and the richness makes your mind grow as well. Bachpan se na. And so, but from childhood, my family had not just had a hunger for this themselves, but fostered that openness in their children.
And this is why meri dadi ji, she took me to India with me, kyunki wo chahti thi that I would be able to understand the broader world, America ke bahar. And so I think that attitude of openness, uska asar pada, it was always encouraged, and not in a way that threatened the Christian tradition that my parents held very dear to them. It was not, बहुत लोग हैं अमेरिका में जो सोचते हैं कि क्रिश्चियनिटी का मतलब है कि एक ही रास्ता है और उसके रास्ते के बाहर कुछ नहीं हो सकता है, you know, like कुछ नहीं हो सकता, that it's not, that nothing else is important and nothing else matters. लेकिन मेरे खानदान में ऐसा माहौल नहीं था. There was always a sense of maybe even a kind of Sufi awareness that truth can take many forms. Wow. So iska asar pada. I think this is my explanation today. बहुत अच्छी बात. तब अलीगढ़ से हमारे दोस्त असद फैसल फारूकी भाई आदाब कह रहे हैं. न्यूयॉर्क बल्कि उर्दू अदब की मायानाज शहरा हुमैरा रहमान न्यूयॉर्क से देख रही हैं, आपको सलाम कह रही हैं. और रजिया मशकूर हमारी अली साथी हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं. और रजिया मशकूर बॉस्टन से देख रही हैं. शी इज ऑल्सो कॉल्ड रजिया बॉस्टन. और हुमैरा कह रही हैं डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट इंडीड. बिल्कुल जनाब, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप. उज़मा दानिश साहिबा वक्त निकाल लिया है, इन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है और कह रही हैं आई एम एंजॉयिंग योर डेप्थ ऑफ कनेक्शन विथ लर्निंग एंड ग्रेट क्यूरियोसिटी फॉर नॉलेज. गुड, थैंक यू उज़मा साहिबा. और रजिया मशकूर कह रही हैं कि वंडरफुल एपिसोड टुडे जावेद भाई. नवाजिश करम एहतिशाम जमील कराची से कह रहे हैं आज की आवारगी यादगार रहेगी. वी होप सो. तो बड़े अच्छे अच्छे लोग बड़ी अच्छी अच्छी कमेंट्स कर रहे हैं और आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कर रही हैं मोहतरमा. तो हमने मैं क्या, आई एम लॉस्ट. अच्छा, आपकी उर्दू की इंस्ट्रक्टर भी रही हैं, उर्दू भी पढ़ाती रही हैं. ये कोर्स जो आप पढ़ाती हैं तो इसमें स्टूडेंट्स कौन होते हैं आमतौर पर? लाइक स्टूडेंट्स कौन और कितने होते हैं? So मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुअल्लिम थी 1 साल के लिए उर्दू और हिंदी की. और मेरे क्लासेस बहुत छोटे थे, आमतौर पे 5-6 लोग थे. और आमतौर वो लोग जो जिनको उर्दू और हिंदी नहीं आती, मतलब they didn't grow up hearing it in the classroom. मुझे लगता है कि खासकर उन तालिब इल्मों के लिए I am a good instructor. कि मैं समझती हूँ कि how do you begin from the environment when everything feels very new to feel encouraged. To feel encouraged that you can grow and learn. क्योंकि कभी-कभी लोग सोचते हैं कि अगर आप बचपन से एक ज़बान नहीं सीखते कि आप you'll never learn it well enough. And इस तरह की belief से कुछ नुकसान भी हो सकता है. कि that there's this belief if you don't begin from birth that you cannot learn. लेकिन I'm very good evidence कि sure, मेरी उर्दू is not perfect. It will always need to be growing and developing. That's the case for my English as well, right? That I'm always growing and learning even in my Madri Zaban. And so I think I think the students who find me helpful as an instructor are those that are beginning their journey and could use some encouragement. कि ठीक है, कोई बात नहीं अगर you never read this script before. Let's start this exciting journey together. वाह वाह वाह. अच्छा, मैं आउट ऑफ एक्साइटमेंट ये बताना भूल गया था कि रेहाम अब्दुल्ला जो इजिप्ट से देख रही, इजिप्ट हमने बता दिया था,
कायरो, मगर ये नहीं Oh, बताया था कि शी इज फ्रॉम अल अज़हर यूनिवर्सिटी, और ये अल अज़हर यूनिवर्सिटी के, हाँ, उसमें ये उर्दू पढ़ाती हैं, और इनका भी इंटरव्यू हो चुका है, और इट्स नाइस दैट शी इज हियर। lovely. असलम जमशेदपुरी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और उर्दू के प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, मेरठ यूनिवर्सिटी। आई गेट लॉस्ट, मेरठ यूनिवर्सिटी के हैं। आज अच्छी बात यह है कि बड़े उर्दू वाले हमारे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, दैट्स वंडरफुल, कि जल्दी से उर्दू वाले जो पढ़ाने वाले हैं वो लोग आते नहीं है, मगर आपकी मुबारक कदम, देखिए सब कौन कौन चला आ रहा है, समझे, दैट्स वंडरफुल। शुक्रिया। और अच्छा, आप लखनऊ और जयपुर जा चुकी हैं, लखनऊ में रही हैं आप, तो लखनऊ का तजुर्बा कैसा था? Oh, जैसा आपने सुना था कि I साहब लखनऊ उमराव जान अदा, तो वहां रहते भी कैसा लगा? yeah, I am a passionate Lucknow enthusiast. अच्छा, इतना अच्छा लगा मेरा तजुर्बा लखनऊ में। मैं एक बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे लोग मिलते थे। It was a wonderful experience. वहाँ पे वजीर हसन रोड पर एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्टडीज है, जिसका डायरेक्टर एहतशाम खान साहब थे और है आजकल भी, और बहुत अच्छे मतलब उस्ताद भी थे वहाँ पे, and through their generous guidance I was able to develop. और वहाँ पे उसका पॉलिसी ये है कि आप एक फैमिली के साथ रहते हैं और सिर्फ उर्दू ही में बात हाँ, करते हैं। वो अपनी पूरी कोशिश करती हैं कि we are immersed in the Urdu environment, और वहाँ, और जरूरी भी इससे एक बहुत गहरी दोस्ती भी बन जाती है। So I have made very lifelong friendships गुड। with the family that I lived with in Lucknow. और मैं actually, I mean, WhatsApp पे हम हमेशा बात करते रहते हैं, और मैं लखनऊ वापस जाती रहती हूँ। And I'm fortunate to be able to call Ihtisham Sahib bhi a friend now. He's very, everyone, I have benefited so much from the generosity of mentors and friends. And I will never be able to repay that generosity. वंडरफुल। लखनऊ, मैं आपको बता दूं कि माय पेरेंट्स आर फ्रॉम लखनऊ, और मेरी पैदाइश कलकत्ते की थी। लखनऊ मेरा भी जाना आपकी तरह होता रहता है। मगर अभी यू हैव मेड मी वेरी नॉस्टैल्जिक। इन दिनों हमें लखनऊ में होना चाहिए था। आई हैव एन इनविटेशन, वहां दास्तान गोई के लिए बुलावा हुआ है, मगर बिकॉज ऑफ कोविड अभी नहीं जा सका। नेक्स्ट ईयर जाऊंगा। उनसे हमने कहा कि सब नेक्स्ट टाइम जब आएंगे, जब हालात ठीक हो जाएंगे, और उस वक्त देखा जाएगा। तो लखनऊ की बात चल रही है। लखनऊ की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, आप पुराने लखनऊ में आप नहीं रही, हम लोग जाते थे, पुराने लखनऊ में रहते थे, तो सुबह सुबह फेरी वाला आता है वहां आवाज लगाने के लिए, और एक चीज बेचने के लिए आता है, आवाज लगाता है कि दौलत की चाट ले लो। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस इन माई चाइल्डहुड कि ये दौलत की चाट, आई थॉट के पैसे वैसे देने आया, तो ये क्या है? तो बालाई को, यानी रबड़ी बालाई, जो मलाई मलाई होती, उसके बेचने वाले आते थे, वो उसे कहते थे दौलत की चाट ले लो। एंड दोस चाट वर Oh, रियली गुड, बहुत मजे की चीज होती थी जी। और इसलिए दौलत की हाँ, चाट। हाँ, बहुत ही मजे की चीज होती थी। तो लखनऊ की बात चल रही है, शतरंज के खिलाड़ी फिल्म देखी थी आपने? जी, देखिए। देखी थी, पसंद आई थी, अच्छी बिल्कुल, हमने। हाँ हाँ, पसंद आई। एक्चुअली हमारे क्लासेस में, सो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्टडीज में हमारे सॉरी अलग अलग क्लासेस हैं, और एक क्लासेस सिर्फ फिल्म के लिए हैं। हमारे मनपसंद क्लास थे ना। एंड सो वी वुड वॉच शतरंज की खिलाड़ी सीन बाय सीन, और एक छोटा सा सीन देखकर you know, डिस्कशन। we would pause and discuss, and actually we would have to line by line repeat back what was ओह, being said. क्योंकि we वाह, actually मुझ जैसे लोगों के लिए सिर्फ बोलने का मश्क की जरूरत नहीं है, सुनने और समझने का मश्क
की ज़रूरत की ख़ास ज़रूरत है क्योंकि वो लोग जो बचपन से सुनते रहते हैं उर्दू, their ears are trained. They know how to understand very clearly. And so we were training our ears to be able to distinguish the sounds properly and be able to repeat back the phrases. Kind of similar to primary education in a way. You know, we're learning from the ground up. So this is how I listened to Satranj Ki Kalari. Good. And so I remember more learning from this film a love for the taste of the language on my tongue. You know, Yeah. that was an influential film for me. अच्छी फिल्म थी yeah. और उमराव जान अदा सेकंड दिस इज सेम थिंग या अच्छा साहब बांग्लादेश आप ये नहीं कहेंगे कि बांग्लादेश में आपका चाहने वाला नहीं है देखिए बांग्लादेश से कॉम्प्लीमेंट आई है हफ्सा अख्तर साहिबा शी इज यंग प्रोफेसर फ्रॉम ढाका यूनिवर्सिटी उर्दू पढ़ाती हैं और हफ्सा अख्तर देख रही हैं और आपको अस्सलाम वालेकुम कह रही नुमान हैदर साहब देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं और नियाज जराजपुरी भाई भी देख रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं लंबी चौड़ी आवारगी के इस यादगार और काबिल तारीफ एपिसोड के लिए मेजबान और मेहमान दोनों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं शुक्रिया हुजूर गुल खान हमारी दोस्त हैं जो कि जयपुर से देख रही देखिए राजस्थान की बात हो रही थी तो राजस्थान से ये आ गई हैं जयपुर में ये उर्दू गालिब अकेडमी एक है वो चलाती हैं हुमैरा कह रही हैं immersion way of learning is the best way and effective in learning a language. ये भी बता दूं कि हुमैरा रहमान यॉन्कर्स न्यूयॉर्क में हैं मगर she also teaches उर्दू किसी प्रोग्राम के तहत उर्दू भी पढ़ाती हैं तो बहुत सारे उर्दू वाले आज जमा हो गए आपकी वजह से और अच्छा साहब आपने ताजमहल भी देखा बड़ी अच्छी तस्वीर भी खींची तो ताजमहल तस्वीर में तो जो नॉर्थ अमेरिकन हैं उनको ताजमहल के बारे में लगता है कि हाँ भाई एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग होगी मगर इनफैक्ट जब आप जाते हैं ताजमहल को देखने इन पर्सन तो उसका जो असर होता है वो तो व्हाट वाज योर फीलिंग जो आपने पहली बार ताजमहल देखा मैं इस फीलिंग को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी उस फोटो से आई वाज ट्राइंग टू कैप्चर दैट सेंस ऑफ आई थिंक मे बी the silhouette in that photo of another student who is on the trip because she's difficult to make out in the photo. Through this, I'm trying to capture the way that it kind of makes everything else fade away. You know, the only thing that you process in this moment is the immensity, the clarity with which the stones kind of emerge and make the people around it fade into insignificance. You know, I think it feels very much as if it could have been a building built yesterday or last week or last year because it speaks very directly to me as an observer. So I think this is what I was trying to get across. It made a very deep impact, absolutely. I think also that it is this kind of haven still in the middle of a very busy urban space. So I think the contrast between the chaos and bustle of town life outside and then the absolute clarity of serenity inside was very powerful to me. What a good explanation. बहुत अच्छे. आपकी किताब जनाब Print and the Urdu Public. I really like the title. Title भी बड़ा खूबसूरत है, बड़ा यूनिक है. इसकी कोई तफसील बताएं. बिल्कुल मैं करती हूँ. It's a little bit of a it's a misnomer, of course, because no book can capture all of the Urdu public. It's kind of inviting readers to engage, but it's a very small, detailed study, in fact, of Medina Akhbar, a small Urdu newspaper that became very widely popular across South Asia and the world in the early part of the 20th century. And one story I'm trying to get across in this book is how a Qasba context, this Qasba mahal, could incubate extremely important conversations from the margins. And so it wasn't simply
that large cities were developing ideas and then they're scattering out to the rural places. But in the home of Maulana Majid Hassan, the proprietor of Medina, there was this very, very lively international conversation occurring outside of the observation of colonial administration, that allowed them to actually be very influential in the topics that were being discussed, but also in trying to connect the language of Urdu with the Muslim community as well. And so I'm interested in how periodicals helped foster that sense of connection. Wonderful. It's a very important book. I think English में तो है अच्छी चीज ये इसका उर्दू तर्जुमा भी होना चाहिए. It's a very important document. Oh, I would be thrilled. Agar koi, if anyone wants to help me, so मुझे बता दीजिएगा. I would be so thrilled to work on that. और यानी प्रैक्टिकल आपने पूरी की पूरी प्रैक्टिकलिटी के साथ उसकी लिथोग्राफिक प्रिंटिंग का तजुर्बा किया. आप प्रिंटिंग कर रही हैं, समझे. हमारे it's so fun. I would encourage anyone to learn lithographic printing. और अभी भी आप you're telling that still it is in practice in US? So in the US, it's not in practice commercially, but for artists, it's practice. So one thing that was so attractive about lithography for printers in the late 19th century in Urdu is it could capture the beauty of nastaliq in a way that no other printing form could. And that's one reason why artists now in the US use lithography. It can capture nuances that aren't captured in any other way. So it took some creativity. I worked with a printing press, uska naam hai Stone Fox Printing in Philadelphia. Okay. And I asked for private lessons, and I went to explain how these newspapers were created based on what I knew, and we worked together to figure out how to reproduce these aspects of the newspaper. And I learned a lot. और मेरे तालिब इल्मों के साथ भी हम जाते हैं. So हर 2 साल में एक क्लास पढ़ाती हूँ जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ प्रिंट इन साउथ एशिया. और पिछले साल हम स्टोन फॉक्स लिथोग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस गए थे और हम मशक कर रहे थे कि कैसे हम ये तस्वीर छुपा सकते हैं. And I think from this there's also a benefit to showing students not just how the words are created in the mind, but how they take form on the page. Practically. Wow. So 18th century Mughal woman, इस पर आपने थोड़ा सा बताया था. इस पर जो आप काम करें, it seems very interesting. यानी इस पे कोई किताब भी आ रही है आपकी या सिर्फ ये लेक्चर सीरीज? फिर से बोलिए, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी. 18th century Mughal woman, ये जो पोस्टर था, यानी ये जो लेक्चर सीरीज थी मेरे ख्याल में, तो इस पर क्या कोई किताब भी आप कर रही हैं या इट इज जस्ट? जी मैं किताब कर रही हूँ. इट्स इन द बिगिनिंग स्टेजेस क्योंकि मैं इंडिया जानना चाहती हूँ. नाउ ऑल आई हैव इज द आर्काइव ऑफ द European descendants. But the bigger and more important part of the story is in going to Bihar, going to Purnia, seeing what I can find out, if anything, about her family. And in fact, I can, if it's okay, I can show you a picture of one of the of the actual archives, so you can get a sense of the beauty of what we're working with here. Is it possible to share my screen? Is it? I don't know if it is. नहीं. कोई बात नहीं. No, it's okay. I'm sorry. I just sprung this on you, didn't I? I will, let me see if I can maybe send you a link somehow. But I'll put the link in the, I'll put the link in the chat, maybe. Maybe this would be possible. Yeah. So this is the draft archive, and we're still developing it. So this is a
an advance release for your audience. This is something not available yet to the public, so you all can get to see it. But if you click on this link, you'll be able to see some of the Persian letters, very beautiful letters written by Sharaf-an-Nisa Khanum's brothers. So their names were Mirza Daim Beg, Mirza Qaim Beg, and Mirza Alim Beg, and they were writing to her husband asking for patronage from the East India Company, you know, wanting to make sure they retained the land revenue rights that they had received when Gerard Gustavus Dugrel, the East India Company official who ended up marrying Sharaf-an-Nisa Khanum, was in the superintendent of Purnea. So it's a very fascinating story because it's very complicated. You know that. Yeah, I mean, very big power dynamics. बताइए. Santosh Bakaya साहब कहने the book promises to be very interesting. संतोष जी, आप और सारे दोस्तों को ये बता रहा हूँ कि चैट में अगर आप देखें तो लिंक एक दी गई है. If you can, तो इसको देखें. जो interested है वो they can see it later. और so wonderful. This book will be really because not only that, this book is a good excuse for me to write a play. कि इसके ऊपर ड्रामा बहुत अच्छा हो सकता है. But please feel free to use it as your inspiration. It will be a really good. बहुत ही अच्छा. ऐसी एक फिल्म भी, एक किताब आई थी और Abdullah and Victoria, something like that. Yeah, Victoria and Abdul, I think that was the name. Yeah, and I think this is, if I can be so bold, I think there are so many risks to writing a story like Sharaf-an-Nisa's, because I haven't seen the Victoria film, but I think sometimes it can end up being very apologist, you know, saying, oh, it was just about two friends coming together and exchanging knowledge. But of course, there is this huge power dynamic as well. And so what we're trying to do with the Sharaf-an-Nisa archive is acknowledge, you know, there was real, you know, there were power differences here. She will England gayi thi, yes, but she probably went because otherwise her children were going to be taken from her. Because aam taur pe वो औरत जो बीबीज थे, like that was the word bibi used to refer to the women who lived with the East India Company officials. Their children were sent away from them when they were very young because there was this fear by the European fathers that their children wouldn't be English enough. And so even behind this very interesting story is it is the story of an extremely strong woman who did very difficult things to stay with her children. That's also a big part of this story. तो ड्रामे की बात आई तो एक ख्याल ये भी आया कि उर्दू जो कोर्सेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है, आपकी अभी और दूसरी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में भी, इनमें मोस्टली शायरी और फिक्शन की चीजें पढ़ाई जाती हैं. क्या इनमें ड्रामा भी है शामिल या नहीं? Do they teach drama? Urdu I think not enough. I think that there certainly should be more engagement. I think there's a lot of engagement with film drama because they're easily available and also students find them very engaging. You know, it's fun. And it feels very much part of the student's life as well. Now you have all these wonderful dramas on Netflix and YouTube, and it's so easy to just be able to pull it up and enjoy. So I think film is a very strong part, but I think drama in general, in my personal experience, there was not as much engagement with that. We looked at the Rao Jan play. I remember that in the American Institute of India Studies, but I'm sure you'll be able to give you'll be able to give a lot of good advice about which plays you think would resonate with students. Sure. So Bittu Singh हमारे एक अच्छे दोस्त हैं. He's watching from New York. और Bittu Singh कह रहे हैं, how lovely to hear from Hindi, Urdu from you. You have put a smile on our face. बहुत अच्छे, wonderful.
اور आपकी संगीता मेहरबानी. न्यूयॉर्क वालों का की अब लाइन लगी है, न्यूयॉर्क से देख रही हैं संगीता खन्ना अहमद. ये हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, और जिन दिनों मैं न्यूयॉर्क में टेबल वेट करता था, वेटर का काम कर रहा था, संगीता यूज्ड टू बी द होस्टेस ऑफ दैट रेस्टोरेंट, और बहुत पुरानी दोस्ती है. संगीता इज ऑल्सो हिस्टोरिकल फिगर, क्योंकि इनके शौहर साहब जो हैं महमूद अहमद साहब, वो शाहिद अहमद देहलवी के फर्जंद हैं. और महमूद भी देख रहे होंगे, ही इज लिटिल शाई, तो कमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी महमूद का भी कमेंट आएगा. तो बहुत सारी बातें हुई. ये बताइए कि आपने अपने स्वीट हार्ट को उर्दू सिखाया या नहीं? बहुत. I mean, a little. As you noticed, I insisted we go to India for our honeymoon. He was very excited too. Yes, slowly. You know, as he's learning. It's an immersion environment, you know, so he's getting some exposure every day. Actually, wo sun rahe hain, wo apne naam pehchan le earlier. He was like, "Oh, I hear you talking about me." Yeah. और वो जानते हैं जब मैं जनूबी अफ्रीका के बारे में बात कर रही हूँ कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ उर्दू में. So, and actually हमारे बहुत सारे दोस्त हैं फिलाडेल्फिया में जिनको उर्दू हिंदी आती हैं, तो वो आहिस्ता he's learning. Wonderful, wonderful. आप लखनऊ से आपकी कनेक्शंस और इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा है. लखनवी कुर्ते आप खूब पहनती हैं, और आज लखनवी कुर्ते की जो तस्वीर आपकी थी उसके ऊपर कोई 600-700 कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं. मैं आपको वो भेजूंगा फोटो. और मगर लखनवी कुर्ते के अलावा क्या लखनवी बिरयानी भी आप घर पे बनाती हैं, या रेसिपी मैं भेजूं? क्या करूं? So जब मैं इंडिया में थी, I took cooking lessons, और I'll be honest, my rotis are not very round, so that's my shame. मैं कोशिश करती रहती हूँ. हाँ, मैं खाना पकाती हूँ, मैं हिंदुस्तानी खाना पकाती हूँ घर में, लेकिन it will never compare to वो खाना जो लखनऊ के खानदान पकाते हैं, वो जिनके साथ मैं रहती थी. It's always paling in comparison to the delicious food at home in Lucknow. So I can't say I really truly make it. मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ and usually fail. मगर लखनऊ का एक कबाब बहुत मशहूर है, टुंडे का कबाब. हाँ, टुंडे कबाब बहुत मजेदार हैं. हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. उसकी याद आती रहती है हर रोज. तो फिर इंडियन फेवरेट डिश कौन सी आपकी? Biryani itself. Yes, you already cited it. It's every form. Yeah, biryani is my favorite. Oh, especially infused with saffron. Oh my goodness. तो सब कोई हमने बहुत सारी बातें की आज. इट वाज रियली इंटरेस्टिंग. तो कोई खास बात जो आप बताना चाहें और वो रह गई हो, तो बिला तकल्लुफ फील फ्री आप बता सकती हैं फिर, क्योंकि आपको पकड़ना मुश्किल है. और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि मेगन रॉब साहिबा बहुत ही मसरूफ टीचर हैं, बहुत ही मसरूफ प्रोफेसर हैं. इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है. तो एनीथिंग यू वांट टू ऐड? माफ कीजिए. I know I think I was very, I mean, मुझे उम्मीद है कि ये दिलचस्प है लोगों के लिए. I think I was very shy कि how could this possibly be interesting to anyone else. लेकिन सब लोग इतने मेहरबानी से बहुत comments लिखते हैं. That's very kind of you all to listen. तो एक बिरयानी तो डी हो गई हमारी. मैंने बोला समझे तो जरूर, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स अच्छे आए. और लखनऊ के एक और बहुत अच्छी हमारी दोस्त हैं, वो आज नहीं आई, मंजिलत फातिमा इज द ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ वाजिद अली शाह. और जी, उनका इंटरव्यू भी हम कर चुके हैं, और शी इज वेरी फेमस फॉर हर बिरयानी. तो आई थिंक के मंजिलत से आपकी कांटेक्ट करवाऊंगा मैं. और जी बिल्कुल, प्लीज टीच मी.
عذرا مناس صاحبہ کولکتہ سے دیکھ رہی ہیں. شی از آلسو ٹیچر, بہت اچھی فکشن لکھتی ہیں اور کہہ رہی ہیں بہت مزہ آ رہا ہے اردو سننے میں. اڑن تشتری دوست ہیں ہمارے, اور سو نائس ٹو ہیئر دس ٹاک, تھینک یو. اور سالیہ رشید صاحبہ اردو کی نہیں, یہ فارسی اور عربی کی پروفیسر اور ہیڈ ہیں, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ الہ آباد یونیورسٹی. Oh my gosh. سالیہ رشید بھی کہہ رہی ہیں بہت دلچسپ اور حیران کن گفتگو چل رہی. تو سالیہ رشید صاحبہ سے آپ فارسی میں بھی کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. تو فیل احمد صاحب دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں لرننگ اردو فرام ڈاکٹر میگن راب از اے گریٹ پریولیج. تو کافی اچھے دوست اور شروفا نے آپ کے کمنٹس کیے ہیں آ کر. تو اینی تھنگ یو آر ایڈنگ یا وی ول ریپ اپ؟ This is wonderful. Thank you so much. It's thanks to you that I've been given this opportunity. آپ خواہ گھبرا رہی تھی کہ پتہ نہیں میں کہاں پھنسا دوں گا. We have such a wonderful friends and they gather every week. اور یہ ہمارے ان کو پیٹرنز بھی کہہ سکتے ہیں اور خریدار دکاندار جو کہیے, they come every week. They are really good patrons, good friends. تو محترمہ ڈاکٹر میگن راب صاحبہ, آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اتنی ساری راز کی باتیں بتائیں, بریانی سے لے کر اور لیتھوگرافک تک. مجھے پتا ہے آج کل آپ کی سمپوزیمز بھی چل رہے ہیں, یو آر بزی, مگر اس کے باوجود آپ یہاں موجود ہیں. تھینک یو سو مچ. اور دوستوں, آپ سب کا بھی فردن شکریہ کہ ہر ہفتہ شنبہ کی شب, یعنی آپ لوگوں کی شب, ہماری اور میگن صاحبہ کی صبح ہے یہ, آپ لوگ میری آوارگی کو وقار بخشتے ہیں, اپنی محبت اور دوستی کا بھرم رکھتے ہیں. اپنے احباب اور محلے والوں کو بھی آوارگی پر راغب کیا کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کروایا کریں کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے اور چراغ سے چراغ تادیر روشنی دیتا ہے. اگلے ہفتے یعنی اکتوبر 30 ہمارے مایہ ناز مہمان ہوں گے ڈاکٹر آصف علی محمد, جو کہ موریشس یونیورسٹی کے مہاتما گاندھی انسٹیٹیوٹ میں اردو پڑھا رہے ہیں. ضرور شرکت کریں. اور حضرات, اب تو جاتے ہیں بتکدے سے میر, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. خوش باش.